Good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome to you all to the curtain raiser session of the 5th Tata Steel Jharkhand Literary Meet in association with Prabhat Khabar. Before we proceed, please allow me to share a mandatory safety announcement. The Center for Excellence lawns are a PPE-free zone audited for safety. However, in case of any unlikely emergency, kindly do not panic and walk to the assembly point on your left and await further instructions. May I request all the audience to kindly put their phones on silent mode, please. At Tata Steel, we take pride in our continual efforts to try and patronize, promote and preserve our discerning heritage of art, culture, and literature. Our literary meets are signature community outreach programs on an intellectual platform that brings together the people from the world of literature, cinema, art, and culture to share their ideas and thoughts on contemporary issues. The previous curtain raisers in Jamshedpur have had eminent authors and speakers like Ruskin Bond and Devdutt Patnaik. This year, we have the privilege of having amongst us the key speaker for the 5th curtain raiser of the Tata Steel Jharkhand Literary Meet, Padma Shri and Padma Bhushan, Javed Akhtar Sahab. I would now like to request Mr. Chanakya Chaudhary, Vice President, Corporate Services, Tata Steel, to kindly set the context for the evening. Good evening. I was just thinking, Merlin, whatever I had to say, you already said. So, nevertheless, it's fantastic to be back after hiatus of about a couple of years, though we did a few hybrid shows in between of literary meets. I think this whole thought of carrying on with the art and culture and sports events, which joins and binds all of us as a society, as a community, has come back to us as a legacy. So having started with that, I must thank all my senior colleagues, former colleagues, and their spouses who are here today, the senior colleagues from Tata Steel who are also with us. Mr. Narendran is not with us, he's traveling overseas. Mrs. Narendran, who's our biggest supporter, advisor, and also critic at time, which is good. We get a lot of feedback for improvement. And a lot of you who are here with us as the Citizens Forum and Jamshedpur citizens. Thank you so much for joining in. And Javed Saab, I must tell you, on the way from Calcutta, you told my colleague Sarvesh के कौन audience में हैं आज? तो उनसे कहा कि सब senior लोग हैं, तो उन्होंने कहा अरे जावेद साहब ने कहा मुझे young लोगों से बात करनी है. So मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब young हैं सर, हम लगते थोड़े से बूढ़े हैं अभी, but I must say that we are pretty young at heart if we don't look young. And I must tell all of you that I had the opportunity of spending some time with Javed Saab in Calcutta, I think in January this year, March this year. And what does one say about Javed Saab? He's a storyteller. I think, I don't want to say lyrics and scripts and screenwriting and stuff, but he's actually a storyteller. And I still recall a story which you told me about your struggling days. And I asked him, you know, tell us something about your struggling days. And I remember what he said. He said that struggling days उन्हीं लोगों से पूछा जाता है जो successful हो जाते हैं. And he told me a story about how he had to move from, I think if I'm not wrong, from possibly Bandra to some outskirts, and he had only money to buy chinia badam, as we say, for the whole day. That was a fantastic story. Just to set the context, as Merlin said, to do my duty, I think we've come a long way where literary events are concerned. I think Jamshedpur has always had the opportunity and also the past background that we look at of getting a lot of known literary people to Jamshedpur to share their thoughts, values. We've also formalized it by calling it
window on the world for some of the other, I would say, intellectuals who are from across the world. And then 2014 onwards, we started formalizing this as literary meets. I remember we started as an associate partner, associate sponsor in Kolkata, and Kulvin is also here today. It was he who reached out to me saying that, we know someone who's doing this, let's join hands. And I think that was just the starting. We built it up, Kolkata literary meet, and then we added Bhubaneswar, and then we added Ranchi. And while we were doing it, a lot of questions got asked by our own colleagues saying, why not Jamshedpur? And we said, yes, we have deliberately not brought it to Jamshedpur because Jamshedpur has a lot of events happening. However, we decided that we will either do a curtain raiser or a curtain call for the circuit of literary meets, and I'm happy that we are here again for a curtain raiser this year. We start the literary meet circuit tomorrow at Ranchi for 2 days, 10th and 11th, a very good lineup. If some of you are really interested, can also physically come there. And Audrey House is a fantastic venue. It's also a Facebook Live, right? So you could see it there. And then the circuit normally is Ranchi, Bhubaneswar, Calcutta, but this time, I think looking at the weather and the fog, Malvika, she decided to do Jamshedpur, Kolkata and Bhubaneswar. So February beginning will be the end in Bhubaneswar. Kolkata will be somewhere 21st to 26th of January. I think going back in time, Tata Steel has set this context pretty well that we need to engage ourselves more and more with the art, culture, literature and sports. And I think it just goes on. And this circuit of, or this time of October to March seemingly is a fantastic period for all these events. So we just completed a very successful Samvad after a few years, a tribal conclave. And going forward, I think we are still looking at some more properties which we will kind of curate and move forward with. A word about game plan, that is Jeet and Malvika. Jeet is not here, I don't know why, he said he'll be here. But Jeet and Malvika are our partners from the very beginning, not only in literature and literary meets, but also in chess. And we just completed a Tata Steel Chess India tournament in Kolkata last week. First time we've added the women edition as well, and I think it also went off very well. Having said that, Malin also mentioned about some of the likes of others we've had on this platform, Ruskin Bond and Devdutt Patnaik. But I think Javed Saab, you have a very special place in our hearts, and we are all very eager. I'm sure all of this audience is not ready to kind of hear me out more and more. They're all looking at what you have to say and tell us and engage with all of us. Thank you very much for taking time out and coming to Jamshedpur. And I was asking him, this is his first visit to Jamshedpur, though he's only taken a round of Center for Excellence, but I think after this we can take him on a spin of the city at night. It will give you the best look of the city at night. And then tomorrow when we go to Ranchi, you can see a bit more of it. Thank you very much once again, ladies and gentlemen, and hope all of you enjoy the evening as we are all waiting for it. Thanks once again. Thank you, sir, for setting the context for this evening. To initiate this evening, please allow me the privilege to introduce Padma Shri and Padma Bhushan, Javed Akhtar Sahab. He is an Indian poet, lyricist, screenwriter, and political activist. Known for his work in Hindi cinema, he has won 5 National Film Awards and received the Padma Shri in 1999 and the Padma Bhushan in 2007. He has won the National Film Award for Best Lyrics 5 times and the Filmfare Award for Best Lyricist 8 times. Javed Akhtar Saab is also a respected social commentator and activist. He has written a large number of poems against communalism, social injustice, national integration, and for women's rights. The Ministry of Human Resource Development has declared his song, beckoning the misguided youth to come forward and build the country, the national anthem for youth in 1995. Javed Akhtar Saab has been nominated to the Rajya Sabha as Member of Parliament by the President of India in 2010. He was the leading force behind the recently passed Copyright Amendment Bill that restores dignity to lyrics and music composers and gives them
what is rightfully theirs in terms of royalty. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Padma Shri and Padma Bhushan Javed Akhtar Sahab. I would like to invite Javed Saab to the stage to take this evening forward and speak about the role of the poet in society. Perfect. A very good evening to all of you. Thank you very much for inviting me. When I heard so much about this city, Jamshedpur, that I was very, very keen to come here and see it around. It has the unusual distinction that you can drink water from the tap. That's the only city in the country. Thank you very much. I had asked my friend Malvika again and again that what is the topic, what I'm supposed to speak. And she said, you can speak anything, you can say anything, talk about anything. And suddenly I have seen the topic. So it almost caused me a cardiac arrest. But nevertheless, we'll try to get to that. See what has happened, and nobody would know better than you people, that in last 70 years, we have progressed in leaps and bounds. In 47, this country was not even able to make a needle. Today we are one of the 11 most industrialized countries of the world. I remember I come from a middle class and slightly upper middle class family, not exactly upper middle class. And what gadgets we had in a house? We used to live in civil lines. We had a big bungalow. In that big bungalow, there was a Murphy radio, an electric iron, and a couple of Usha fans. That is all. We did not have a phone. It was very difficult to get phone. Even in 60s, 64, 65, when I went to Bombay, it used to take at least 8 to 9 years to get a telephone connection. It used to take 8 to 9 years to buy a Fiat or an Ambassador. So we have progressed, particularly the urban middle class definitely has raised their standard of living to a great extent. Perhaps liberalization, industrialization have broken that status quo which is inherent in any feudal society, because it is your birth that decides what you will be in future. There are no changes. No farmer with hard work could become a landlord or a landed gentry. That was not possible. It was decided, the fate was decided. But in an industrial or commercial society, it's free for all. Anybody can reach anywhere. So obviously there was a great effort to catch the gravy train, and many did. But in this effort, like at any railway station, we forgot some baggage on the platform to catch the train. And that baggage was literature, art, traditional music, classical music, folk stories and folk songs and folk dances and so on. All of it, thank you, all of it was left behind. Somehow the parents decided that anything which cannot be put in the bank is not worth keeping. And the whole stress of education was to get the child into some kind of education which will ultimately get the person a good job, a remunerative job. Doctors, engineers, IAS, chartered accountant, lawyer, so on. But what poetry or literature will do? What is the use of it? And if this person knows what are folk songs of this particular area, how it will help him? And if he understands painting, they can differentiate between one painting and another and appreciate good art, how will it help him?
in living. That was the belief. Even today we have somewhere on subconscious level believe that poetry is at the most either the work of good for nothings or a luxury of the privileged. उसकी necessity कोई नहीं है. It is not required. Either it's a pleasure, entertainment of the rich, or the waste of time for a poor. But it's not true. Poetry or art or music, they are not aspirins that you take one pill and there goes the headache. They are vitamins. Any society that consumes literature, good literature, any society that appreciates good poetry in any language develops aesthetic sense. If it knows its traditional art, every form of art, but let's talk of poetry. When I talk of poetry, I genuinely mean any form of art. What does it give to you? It gives you an eye for beauty, an understanding of aesthetic and unaesthetic. And all that is ugly in this world is unaesthetic, ugly. All that is regressive, all that is unjust, unfair, is ugly, unaesthetic. Is it not a surprise? It is not a surprise that all over the world in human history, the right wing, the people who want to regress, people who want to keep the status quo vis-a-vis the poor or women or minorities, none of them all over the world could produce one big poet. You can't name one big poet in the world who comes from the right wing, who comes from those regressive ideas that we see every day nowadays. It's not possible, because those ideas are not aesthetic. They are not beautiful. And that sense comes by understanding and appreciating literature and poetry. Literature tells you two things which are, in a way, ostensibly incompatible. It tells you that what kind of different people are in this world, what kind of different cultures, traditions are there, different societies. And at the same time it tells you how similar everybody in this world. They have same pains, same agony, same happiness, same emotions, same feelings. This develops a kind of empathy in you for people whom you don't know exactly, but you have been introduced to them by some author, by some novel, short story, play. It creates empathy in you for people who are ostensibly, on face of it, are different from you. So we are paying certain price of forgetting that baggage on the platform. But I'm very positive, I'm not pessimistic about it, because I keep on meeting young people. A friend with whom I travel, and I told him that I want to meet young people. There were many more things I wanted to tell him, but now I won't, because I know that he can't keep secrets. So I see that the enthusiasm in young people about literature, about poetry. You go to Calcutta, you go to Delhi, you go to this great festival called Rekhta, which is predominantly of Urdu. Any Jaipur, the majority of the people who are there are young people.
And not they are having a picnic or they are enjoying it and shouting, and they sit through long lectures and discussions, serious discussions about literature, poetry, language. Now language, since the word language has come, and this is what is my tool, like painters have colors, writers have words. These are our colors. What is language? Is language its a script? Now people who know Punjabi would know that Punjabi is written in Devanagari, in Urdu script, and in Gurmukhi, but it remains Punjabi. Like you see these film posters, KUCH, KUCH, HOTA, HAI, kuch hota hai. Since it is written in Roman, is it English? No. And now the fact is, let's take one more step. Is English Roman? French and German are Roman. They are Latin because the script is from there. Script is not the language. So is the vocabulary the language? All right, maybe. Like if I say, ये venue बहुत pretty, मैंने 5 वर्ड यूज़ किए जिसमें important word है venue and pretty. बाकी क्या ये है, तो क्या मैं इंग्लिश बोल रहा था? मेन वर्ड्स तो सेंटेंस के इंग्लिश में है, तो मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहा हूं? आई एम यूजिंग 2 इंग्लिश वर्ड्स in Hindustani. And I am intentionally saying Hindustani, not Hindi. Because it's a unique situation in our country. All over the world, there is no 2 languages that have same grammar. And language is nothing but its grammar. You can have words from everywhere. But ultimately, what is your syntax? It is the syntax that decides what is the language. Now let's take these 2 languages, Urdu and Hindi. They have the same syntax. Nowhere in the world 2 languages have the same syntax. It's not possible. German and French, French and English, they don't have same grammar, same syntax. Although they have the same script. Now, in Bihar, in UP, there are still many people who cannot read or write. When this person says, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर जा रहा हूँ. पानी पियोगे? खाना खाओगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है, प्यास नहीं है. ये क्या बोल रहा है? This is in Hindi or Urdu. Because exactly the same thing you will say in Urdu and in Hindi. तो ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है? उसको पढ़ना नहीं आता तो नहीं कह सकता मैं हिंदी बोल रहा हूँ, या हिंदी मैंने कहा उसे लिखना नहीं आता तो ये नहीं कह सकता कि मैं उर्दू बोल रहा हूँ. ये क्या है? ये लैंग्वेज क्या है? ये हिंदुस्तानी है जिसकी 2 शैलियाँ हैं, 2 स्टाइल्स हो गए हैं, एक हिंदी एक उर्दू. ये 2 ज़बानें नहीं हैं. This is something we have to understand. And there may be some limit of knowledge in the world. There is no limit to ignorance. There is no limit to ignorance. People have strange ideas about Urdu. When I am talking to you, and as long as you are understanding me, you are sure that I am speaking Hindi. The moment I use 2 words which you don't understand, you say, ये उर्दू बोल रहा है. When you stop understanding, then it becomes Urdu. When you stop understanding because somebody has used chaste Sanskritized word from Doordarshan, he'll say, he is speaking chaste Hindi. ये स्ट्रेंज आइडियाज हैं. ये क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है उर्दू की? ये कहाँ की है? आजकल
बड़े बड़े इसके बारे में कॉम्प्लिकेशन तो बहुत अजीब अजीब बातें होती हैं, सुनने में आती हैं। मैंने तो एक कई साल पहले पढ़ा था कि 2 टेररिस्ट मारे गए एक कार के अंदर, और उसके अंदर से कुछ RDX निकला और 2 इलीगल गन्स निकली और 3 उर्दू की किताबें। तो इट हैज़ बिकम लाइक RDX। तो ये है क्या? ये क्या ज़बान है? कहाँ से आई है? मुझसे तो एक पढ़ी लिखी लेडी थी वहाँ उसमें बॉम्बे में, और बड़ी अच्छी पेंटर भी हैं, मेरी बड़ी दोस्ती है उनसे। तो एक दिन उन्होंने इन अटर सीरियसनेस एंड इनोसेंस मुझसे सवाल किया, जावेद ये उर्दू तो बाबर के साथ आई थी ना? तो मैंने कहा हाँ, उसी के घोड़े पे बैठी थी, पीछे बुर्का पहने थी। तो लैंग्वेजेस ऐसे आती जाती नहीं है भाई, ये बेस्ड है एक खड़ी बोली, एक डायलेक्ट। Now dialect means no script. Dialects are languages which don't have their own script. Since Persian at that time was the lingua franca of the elite, not only in India and not only in North India, but even in Maharashtra, Peshwa, the word Peshwa itself is a Persian word. Peshwa, Pesh yani आगे, जो आगे चले, leader. So some people, because this script was available, started writing this dialect Khadi Boli in Persian script. This is the beginning of Urdu, which is almost 800 years old. Much later, the same dialect was written in Sanskrit script that is called Devanagari, and that was called Hindi. The same dialect. So वो बेस ही जो है कंफ्यूजिंग है। वर्ड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक 5-6 लाइन में बोलूँगा आपको, आप सुनिएगा। अगर किसी को भी कोई वर्ड डिफिकल्ट लगे तो प्लीज रेज योर हैंड। एक मकान के एक कमरे में एक गोरा चिट्टा आदमी, एक नन्हा मुन्ना बच्चा बाल्टी से नहाए, बावर्ची ने नाश्ता दिया, नाश्ते में उड़द की दाल और टोस्ट था। आदमी उठा, चिक हटाई, संदूक खोला, उसमें से पिस्तौल निकाला, दीवार पे टंगी, बंदूक ली, बाहर चला गया। बच्चा बेबस देखता रहा, आदमी रिक्शे पे बैठ के चला गया। आप में से किसी को कोई वर्ड डिफिकल्ट लगा? नहीं? ऑलराइट, लेट अस एनालाइज दिस। मकान अरबिक, कमरा इटालियन, इन कैमरा मीटिंग, इट इज अ इटालियन वर्ड। गोरा चिट्टा में चिट्टा इज पंजाबी, नन्ना मुन्ना में नन्नो गुजराती, बच्चा इज अ पर्शियन वर्ड, बाल्टी इज अ पोर्चुगीज वर्ड, बावर्ची इज अ टर्किश वर्ड, उड़द is a Tamil word. Toast is an English word, toast. Chick, again Turkish. Sanduk, again Turkish. Pistol, English, pistol. Banduk, Turkish. Diwar, Persian. Bebas, Sanskrit. Vivash. Now fasten your seat belts. Rickshaw, Japanese. तो ये क्या है? लैंग्वेजेस जो हैं, कोई भी लैंग्वेज, जब उनके वर्ड्स के रूट ढूंढेंगे वो कहाँ से आए हैं, तो इन एवरी लैंग्वेज, नॉट ओनली आवर लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज, वर्ड्स आर फ्रॉम मेनी प्लेसेस। अब बीच में एक कुछ होम मिनिस्ट्री से हाई कोर्ट को एक सर्कुलर गया था कि जो है, जो पर्शियन उर्दू वर्ड है निकाल के आप इंडिजिनस वर्ड, लाइक उर्दू इज़ नॉट इंडिजिनस, वो इस्तेमाल कीजिए। बट इट डिड नॉट वर्क, और 1.5-2 महीने बाद उन्होंने कहा भैया पॉसिबल नहीं है, और वो सर्कुलर वापस ले लिया गया। बाय द वे, आई थिंक इट्स नॉट वेरी एक्सपीडियंट ऑफ मी, बट आई मस्ट टेल यू, शाह इज़ ऑल्सो अ पर्शियन वर्ड। दैट्स अ फैक्ट। तो ये जो है
पोएट का रोल क्या है? वो एस्थेटिक्स तो आपको देता है. क्या पोइट्री रेवोल्यूशन ला सकती है? पोइट्री से सोसाइटी चेंज हो जाएगी? आई थिंक वी विल बी गिविंग इट टू मच ऑफ क्रेडिट. ऐसा होता नहीं है. Because poetry is not the only force that is working in the society. There are many much forces which are much more effective and right there. होता क्या है कि if there is a revolution, if there is some awareness in the society that is brought by the political leaders or by social reformers or by the freedom fighters or whoever, or the women's emancipation groups and so on. Sorry, I'm not going to stop. If he can't stop, I can't stop. So that movement has many members, followers. There are many things, there are ideas, but they don't have words. There are images, but they don't have icons. There are feelings, but they are dumb. They can't be expressed. The poet or the writer gives them the words, gives them a certain clarity and confirmation by anthems, by songs, by slogans. When these anthems, these songs go back, or poetry, and poetry, not only singing but real poetry, when it goes back to the society becomes more focused and more clear about what they want. Because now can see the image. Now they have found the words for what they were feeling and were not able to express. So they feel more strongly about the idea. And when they feel more strongly, then it becomes even easier for the writer or the poet to give more material in form of poetry, in front of anthems, in front of lyrics to that. But I think literature or poetry at least comes second. It may make some dents if somebody is writing, and there are so many people who write about the downtrodden, about the underprivileged, about women's empowerment. Lot of literature, lot of poetry by women and men are being written. But ultimately, it has to be backed by a social movement. It should be a part of the thing. Only slogan, only anthem cannot change it. You need people who are trying on the ground, who are working on the ground, who are willing to put their neck on the block. And when it happens, then Vande Mataram comes. Then it becomes very effective. Because there were people who were willing to stand up and sing that. People, because it was their idea. Not that the idea was born then. It was right there and you gave them words. I'll give you a very crude example. From the subtle to mundane. That is what happened with the angry young man. Although we did it unintentionally, we were not aware as writers that this is the socio-political relevance of this character. But that was the time in 70s when the dream of socialistic pattern of society was broken. When for the first time India was seeing extra constitutional forces becoming so very effective and powerful. When they were seeing that the verdicts of high courts and supreme courts are being rejected and thrown away, there was frustration, there was anger. And suddenly a character through the commercial film came, the angry young man. They identified with him. That is how even poetry works. That whatever is the feeling of the masses, when a poem or a song or a lyric comes which represents that feeling, it becomes popular, it becomes effective, it makes them more powerful. Inqilab Zindabad is a slogan made by a poet. His name was Hasrat Mohani. Now, he did not make this slogan when everything was hunky-dory in the society. It wouldn't have worked. People were angry. People were wanting to bring some kind of revolution.
And then these words were given to her, then they knew what they should say when they are walking together. So I think that poetry does help. Poet has an important role in somehow, somewhere, awakening the conscience of people. But ultimately it works when the masses are in that same frame of mind. And poetry gives them language. Poetry gives them expression. Poetry gives them icons. Poetry gives them the words that we were looking for. I am aware why it doesn't happen, why people don't do it. I'm afraid that after so many thousands of years, even today human being is not a rational animal. He or she doesn't think rationally. I don't blame those people who persecuted Galileo, because what they knew and what was their faith was one. There was no contradiction in it. They knew that the earth, the sun goes around the earth, and earth is the center of the universe. This was their information, this was their knowledge, and this was their faith. So did their holy book tell them. So if they were upset with Galileo, it's totally understandable. Those people were uneducated. What surprises me, that a man who is working in NASA, who is a scientist, who can, thank you very much. जब ये आ रही थी तो मैं समझ गया कि मेरी मदद के लिए आ रही हैं। हल्का गरम आपको चाहिए तो वो भी दे सकते हैं। जी हल्का गरम चाहिए? नहीं ठीक है। वैसे मैं जब बोल रहा हूँ तो एक आध इंजेक्शन भी दे सकती हैं, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। The man who works for NASA and he makes a rocket and he knows that he'll be able to plant this rocket at the precise spot on Moon or Mars. This man goes back to the church and reads that same very book which caused great trouble to Galileo. What is this? It has happened for the first time in 20th century and 21st century. I hope it gets over by the end of this century. That the knowledge and the faith of people are not compatible. It had never happened before. They believed what they knew. Their faith was their knowledge was their faith. It was less, it was wrong, but that is how it was. Now, for the first time, it has happened in 10,000 years of Homo sapiens history, that your knowledge, which you own, which you say it is right, and your faith are not compatible. In psychiatry, there is a word for it. I would rather not pronounce it, because there are so many people like that you can't say it. Otherwise, I would have told you it's called schizophrenia. I won't tell you. I don't know when we will come out of it. And this is very important, because irrational mind cannot live in a watertight compartment. If you have been taught some irrationality, if you have imbibed certain irrationality, it will always overflow and touch other topics also. It is not possible. It is not in watertight compartment. It is like I tell my son, मेरा बच्चा रोता हुआ आता है, क्या हुआ बेटा? फिर मैं फुटबॉल खेल रहा था, एक बच्चे ने मुझे मार दिया. अरे तुम्हें मार दिया? तुम्हें उसे वापस मारना चाहिए था. This is the lesson I have given to the children. Next day the teacher calls me कि इसने एक बच्चे को बहुत बुरी तरह मारा है क्लासरूम में. तो मैंने बच्चे से कहा कि बेटा मैंने तुम्हें फुटबॉल ग्राउंड पे मारने को कहा था, क्लासरूम में थोड़ी मारने को कहा. Is it possible? Once I have taught the children something unreasonable, irrational, aggressive, violent, now where it will come out, that you can't guarantee.
and you can't control that. This is what we are seeing everywhere in the world. उसको आप फिर डिसिप्लिन नहीं कर सकते, आपने उसे बेसिकली इरेशनल बना दिया है। और जब तक ये इरेशनलिटी नहीं जाएगी तब तक ये दुनिया ठीक नहीं हो सकती। ये इरेशनलिटी एक जगह नहीं रहती, इट सीप्स इन एवरीवेयर, बिकॉज इट्स यू आर अलाउड टू बी इरेशनल एंड यू हैव बी ब्लेस्ड। बेटा आराम से इरेशनल रहो, फिक्र मत करो, दैट्स अ नोबल थिंग टू डू। ये है, और ये कब जाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन जाना चाहिए। कि दुनिया में आप देखिए ये इरेशनल एटीट्यूड्स हैं, इरेशनल नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है, ये साइंटिफिक नहीं है। यू पीपल आर साइंटिस्ट, यू पीपल आर इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज रैशनलिटी, लॉजिक। और जहां रैशनलिटी और लॉजिक कम होगी वहां गड़बड़ शुरू हो जाएगी। तो लेट्स होप दैट in future we'll see to it that our next generation is reasonable, rational, logical. ये बहुत ज़रूरी है। मगर किस्सा क्या है, मैंने एक मरतबा एक ट्वीट किया था, तो ट्विटर वालों ने मुझे वो किया, ईमेल किया कि गिव अस द कॉपीराइट। वहाँ पर तो कॉपीराइट भी होता है ना, यहाँ तो कुछ भी चलता है। तो कि टू यूज़ इट ऑन अ वॉल। आई हैड written that even the most religious person is 90% an atheist, because out of 10 religions he looks at 9 like a rationalist. एक ही में उसका दिमाग खराब होता है, बाकी 9 तो रैशनली देखता है, टोटली रैशनली। जो उसका रिलीजन नहीं है उसके बारे में when he talks you get surprised कि the man is capable of such rationality, how can he believe his own thing? तो ये एक जो बचा है 9 से 10, ये जर्नी ह्यूमन सर्वाइवल, ह्यूमन हार्मनी, हैप्पीनेस, प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द लास्ट बैरियर दैट वी विल हैव टू जंप। पीपल विल नॉट लाइक इट। बचपन में उनको इम्बाइब कर दिया जाता है बिफोर दे कैन से जैक रॉबिन्सन, मगर अल्टीमेटली जब तक आप ये रैशनलिटी अचीव सोसाइटी में नहीं करेंगे, दिस विल नॉट बी द कॉमन स्टैंडर्ड और कॉमन ट्रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसमें गड़बड़ तो रहेगी, सब एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, लेकिन ये रैशनल इरैशनल एटीट्यूड्स आते यहीं से। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन। एनीवे, थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद एक Q&A के लिए वी शुड गिव लॉट ऑफ टाइम बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू। To take the Q&A forward, may I now request Malvika Banerjee, Director Game Plan, to kindly come up on stage, please. We will take questions from the audience, and Malvika will address the questions to Javed Sab. Please could you get me some tissue paper? Sure. So I think the best way to do this, good evening everybody, and thank you Javed Sab, that was very educative and lightly told serious fact, which is what poets are supposed to do. They're supposed to tell us serious truths with the leavening of wit and good use of words. So thank you very much for that. And I'd like to take questions from the audience. So if anybody has any question, they can just simply put up their hand. Okay, right in front. Good evening, Javed-ji. I was thinking about the first part of when you started, that poetry is not like engineering or, law that gets you money so easily. What is your outlook on how is it that young people who really like poetry, art of any form, I know there are avenues these days, but poetry specifically does not get you money the way it should. And we have an onus, you
as well as me have an onus to create something so that, poetry is equally earning worthy and a profession that children look forward to. Any thoughts on that? I believe that to think that this profession is safe for the child will be limiting him. There was a time when I was a member of CABE. CABE is the Central Advisory Board of Education. Why they had put me there, it is still a very well kept secret. But anyway, I was there. And there were professors and vice chancellors and headmasters and teachers and so on. I asked them a question that all over India, from north to south and from east to west, thank you very much, you go to any school where there are 8 years, 9 years old children, boys or girls, ask them to make a scenery. They will make a S-shaped river, one little house near there, one tree, cone-shaped 4 or 3 mountains, birds flying, and the sun rising with rays everywhere. Why? What have we done to our children? What has happened to their creativity, their individuality? Somewhere, by giving them a strange kind of education, we crush the individuality of the child. And we think that this is safer, because individuality is dangerous. The fact is that you can only be good at things which interest you. Whether it is music, whether it is engineering. There are many children who are deeply interested in mechanical engineering, children, or engineering, or whatever. In space, today the children are highly informed. Fine, wonderful. Whatever the interest of the child, only there the child will excel. And if you excel in anything, it is worth it. Anything. मैं जब 15 साल का था तो मेरे फादर के एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि अब तुम आगे अब कॉलेज में जा रहे हो, क्या करोगे? आई हैड डन, उस ज़माने में मैट्रिक, फिर प्री यूनिवर्सिटी पे 3 years डिग्री कोर्स होता था, तो मैं अब प्री यूनिवर्सिटी में जा रहा। तो व्हेन यू आर 15 years old यू कैन डू एवरीथिंग, लाइफ इज सिंपल। तो मैंने उन्हें कुछ 10-12 वो ऑप्शन दिए कि या तो ये कर लूँगा या ये। तो ही केप्ट विद पेशेंस, ही केप्ट लिसनिंग एंड जैसे तुम ऐसा करो कि तुम घास काटने वाले बन जाओ। तो आई वॉज अ बिट टेकन बैक, व्हाट इज ही सेइंग? मगर तुम घास काटने वाले ऐसे बनो कि ये बात हो कि भाई वो राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन में घास काटनी है, उसके लिए तो जावेदी चाहिए, तो तुम्हारी वैल्यू है। और अगर तुम साइंटिस्ट एक B grade, C grade बन गए तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। What is important that whatever you do, you should excel in it. तो ये ज़रूरी है, और वो एक्सेल आप उसी में करेंगे जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड है। देखिए, दुनिया हमको एक्सीलेंट होने को नहीं कहती है। The world doesn't want us to become excellent. They are happy if we are good or very good. You see, when we start a life, what are our motives? We want to prove it to our peers that we can do something. We want to prove it to ourselves that we can do something. We want some recognition from the society. We want some reward from the world. By the time you are very good, you get all of it. You get a pat on the back from the uncle who really never liked you, and so on. And you get remuneration, you get a place, you get settled life, you get married, then you have a house, you buy a car, blah, blah. Fine. Why should you be excellent? What is the need to be excellent? The only reason for excellence is your high self-esteem and love for the work. If you have high self-esteem, then maybe everybody is praising me, but I know it can be better. And it has to be better because I am doing it. And two, I cannot insult this work. This work is worth being better. There are only two reasons.
ये रीज़न हम बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं बच्चे में। तो एक्सीलेंस में कहाँ जाए? हम ये समझते हैं उसकी सिक्योरिटी डॉक्टर बनने में है, हम ये समझते हैं उसकी सिक्योरिटी इंजीनियर। अगर बच्चा इंटरेस्टेड है डॉक्टर बनने में, वेल डन, व्हाई नॉट? इंजीनियर बनने में, व्हाई नॉट? और सच बात यह है कि अगर वो दिल से इंजीनियर बनेगा या दिल से डॉक्टर बनेगा तो ही विल बी क्रिएटिव। अ गुड इंजीनियर विल थिंक ऑफ समथिंग विच नोबडी हैज थॉट। क्रिएटिविटी की डेफिनेशन, वी हैव मेड अ वेरी नैरो definition of creative. Anybody who writes poetry is creative. Anybody who makes paintings is creative. No. Most of the poetry in this world, most of the paintings in this world are emulative. They are copies. They are heavily influenced by somebody else. That is not creativity. But if Henry Ford puts automobile on a, what is that called? Conveyor belt, that is creativity. That is creativity. He was a creative man. Edison was a creative man. To think that I should capture sound. I mean, people, his neighbors must be thinking he's mad. Instead of investing his money in some real estate, the man is making strange machines. But that dream, that fantasy, that things can be better in this field, whatever I'm doing, made him Edison. There can be an engineer who will think of something that nobody has thought, that we can make this place or this building or this structure like that, and we can use this material, and the foundation has to be like this, and so on, which nobody has thought. If he is or she is genuinely interested in the work, anything creative, an administrative job can be creative, because if you create a system which never was there, you are a creative person. But it will only happen when the person is genuinely interested in the vocation. If the person has become a doctor or an engineer or a chartered accountant for minimum guarantee of economics, he or she will never be able to find something new. Not possible. Because ultimately from the depth of his or her heart, the person is not there. तो आप खतरा मत देखिए, घबराइए मत। आपका बच्चा जो कहता है मुझे तबला बजाना, बजाओ। If he becomes Zakir, it's a good deal. बजाय इसके वो कहीं पर डिस्पेंसरी लगाए हुए छोटी सी जनरल प्रैक्टिस कर रहा हो और लोगों को जुकाम की दवा दे रहा है, मैं जाऊंगा अभी कल डॉक्टर के पास, तो उससे बेहतर है कि वो इतना बड़ा म्यूजिशियन बन जाए। उसका जो शौक है, उसका जो इंक्लिनेशन है, वो रिस्पेक्ट कीजिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। और उसी में सिक्योरिटी है उसकी। Javed Saab, some point you have to say 2-3 poems, otherwise, I'll be You are behind. you're the only one who is suggesting it. Does anybody want to hear poetry? Please put... No, we'll have some questions first. Poets are First questions, keen then. to recite their poetry. They inflict poetry at the first opportunity. I am not that kind. Sir, आप कुछ पूछ रहे हैं, आप बताइए. The mic is just coming. जावेद साहब, आपको रूबरू देखने और सुनने का सौभाग्य मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने जैसा शुरू में पढ़ाई की बात की, तो मेरा सवाल ये है कि विज्ञान ने बहुत सारी तरक्की की, जैसा आप टेलीफोन का उदाहरण आप दे रहे थे, लेकिन उसकी तुलना में मानवता एकदम असफल है, क्योंकि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 2022 में यूक्रेन और रशिया का इस तरह का होगा। तो ये हम कहाँ चूक गए और क्यों चूके? आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए कि आगे, क्योंकि ये तो इंसान की फितरत है, तो इस फितरत को किस तरह से बदला जाए कि आने वाला वक्त और बेहतर हो? धन्यवाद। पता नहीं इंसान की फितरत है कि नहीं, आपकी तो नहीं है, आपको तो ये बात पसंद नहीं आ रही ना। तो दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनकी ये फितरत नहीं है और वो हार्मनी में रहना चाहते हैं, वो पीस में रहना चाहते हैं। ये सर्टन अपॉर्चुनिस्ट होते हैं हु आर वेरी स्मॉल इन द नंबर, लेकिन वो आपको सिड्यूस कर लेते हैं, वो मैसेज को सिड्यूस कर लेते हैं। Now message should be objective and intelligent and educated enough not to get seduced.
and then they will be ineffective. In any part of the world, or in any community of the world, or in any population of the world, ये जो लोग हैं, they are a minuscule minority, but they somehow spread their tentacles to all over. And वो आम आदमी इजाज़त दे देता है, वो आ जाता है. अभी आप ही देखिए, मैं मिसाल देता हूँ आपको, not that I am criticizing that. आपने मिसाल दी यूक्रेन की और रशिया की कि ये अजीब चीज़ हो गई. इन लास्ट 50 years ये तो कॉन्स्टेंटली होता है यार. अब रशिया कर रहा है तो बड़ी बात है. अमेरिकन ने कितने कंट्रीज को कार्पेट बॉम्बिंग की है. वियतनाम, कंपूचिया, अफगानिस्तान, इराक, and what they have created in Syria, we don't know. इसे यूरोप फोकस करता है, उसे वेस्टर्न पावर फोकस करती है. ये जो है वॉर क्राइम्स हो रहे हैं. What was happening in Kampuchea when Americans were throwing poison gases in Kampuchea? तो ये तो कॉन्स्टेंटली होता रहा है. ये प्रोपेगेंडा है. और इसका रीजन क्या है पता नहीं कितने लोगों को बात मालूम है. When Soviet Union was dissolved, it was an understanding, unwritten understanding, that NATO will not move towards Eastern Europe. Now ultimately, out of these Eastern European countries, 13 countries have joined NATO. And now they were bringing in Ukraine. मगर यूक्रेन तो अलग कंट्री है. How can they do this? Ukraine has all the right to do whatever Ukraine wants to do. Fine. So was Cuba. When Cuba was taking missiles from USA, Mr. Kennedy did not tolerate it. Cuba is another country. आपको क्या तकलीफ थी? No big country will allow such weapons. ये तो हमारा ही कमाल है कि पाकिस्तान लिए बैठा है, हम खुश हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है. वरना अपने नेबरहुड में they don't want nuclear weapons. तो आप इस बात पे क्यों नाराज हो रहे हैं कि साहब यूक्रेन में, और यूक्रेन का तो बॉर्डर मिलता है रशिया से, वहां पर आके नेटो फोर्सेस बैठ जाएंगे. Will Russia allow that? Will America allow that? Why didn't they allow that in Cuba? Is there any answer to it? ये जो इनका प्रोपेगेंडा है वेस्टर्न फोर्सेस का, वो इतना पावरफुल होता है कि हम लोग को चकरा देता है. जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन ये तो होता ही रहता था. आज आप दे आर कॉन्स्टेंटली अपसेट विद ईरान. अरे भाई ईरान क्या किया तुमने? ईरान ने बॉम्ब फेंका आप पर. आपने ईरान का एक सिविल प्लेन जो है उड़ाया है अमेरिकन से some 20-25 years ago, if you have a good memory. आप आज अमेरिकन फोर्सेस कोई मोर देन 100 कंट्री वर्ल्ड में, आप गूगल कीजिएगा, अमेरिकन फोर्सेस की प्रेजेंस है. आप कौन हैं? आपको ये इंटरनेशनल पुलिसमैन किसने बनाया? व्हाई आर यू देयर? व्हाई आर यू स्प्रेडिंग योर टेंटिकल्स एवरीवेयर? दो आदमी थे. देखिए, इट इज अ गिवन दैट मिडिल ईस्ट में डिक्टेटर्स एंड किंग्स हैं. And no dictator can be totally just. That is not possible. Otherwise, he won't be a dictator. Now you have a choice between the evil. Two of them, Gaddafi and this man, Saddam, were liberal dictators. In their regime, women had all the empowerment. They were in different forces, different jobs. There was no parda there. Gaddafi and Saddam are two people who never let ISIS or Taliban enter their country. Never. They were dictators. They got many people killed. So everybody does. In that area, everybody does it. But the fact is that they were much more progressive in their attitude. They were much more secular in their attitudes. Then Saudi Arabia, then Kuwait. But Saudi Arabia and Kuwait, if you want human rights, no Western part talks about human rights in Saudi Arabia. The president of USA gives immunity to Mohammed bin Salman for Jamal Khashoggi's murder. And they talk of humanity and fairness and human rights. Do they have the faith to do that?
Do they have the faith? The fact is that it is an unjust, unfair world. And the fact is, honestly, if you see the history of the planet, after the Second World War, much of the gandagi, much of the injustice is caused by USA. जावेद साहब, मेरा सवाल ये था कि Sir, if I इसमें can make a humble request, okay. No, just one more question, but not any more further. मेरा सवाल ये था कि एक शायर इसमें क्या ऐसा कर सकता है या करना चाहिए, क्योंकि शायर कभी लड़ाई की बात करता ही नहीं, वो समझौते की बात करता है। नहीं, वो तो सही है, लेकिन अब आप चाहें कि मैं यूक्रेन जाके वहाँ पर कुछ गज़ल गाने लगूँ तो मैं भी मारा जाऊँगा, ये मैं करने वाला नहीं। हाँ, चलिए दूसरा। There's a hand right at the back. That the Sardarji gentleman, then I'll come to this Sardarji gentleman. Okay. Let me first go there. Hello. Good evening, sir. Could you please introduce yourself? Sir, I am Ratandeep Singh. I am an IT engineer. Good evening, sir. Good evening. Sir, I have one question for you. Sir, do you think that the essence of literature sometimes gets lost in translation? Well, somebody has said very aptly that translating poetry is like trying to pour perfume from one bottle to another. However carefully you do it, you lose some fragrance. But I suppose, it becomes milder, it may become weaker, but the meaning will not change totally. Tomorrow if you translate, say Pablo Neruda, हमने तो ये सारे पोइट जो हैं, चाहे वो फ्रांस के हों, चाहे लैटिन अमेरिका के हों, चाहे पैलेस्टीनियन पोइट हों, चाहे वो ब्लैक पोइट्स हों जो वर राइटिंग पोइट्री ड्यूरिंग अपार्थाइड इन साउथ अमेरिका, इंग्लिश में पढ़ा है या उर्दू में पढ़ा है मैंने, तो वन टेक्स इट फॉर ग्रांटेड कि जो उनकी अपनी लैंग्वेज की जो फोनेटिक इफेक्ट होगा वो हम कहीं मिस कर रहे हैं, बिकॉज वर्ड्स have many facets. Words are not only meaning. Words के बहुत सारे पहलू होते हैं. Words are like people. You know, you are sitting here, somebody enters. The first thing that will influence you or help you making your opinion is the appearance of the person. Then the person will be introduced to you that he is an IT engineer. And then you will ask him, तो आप कहाँ रहते हैं? Yes, actually sir, मैं पूना में हूँ. अच्छा, पूना में कौन से फला डिपार्टमेंट? वहाँ मेरे एक दोस्त हैं. अच्छा, now you will find some common associations and then you will slot the person. Same with the words. That the word is not only, are you listening sir? बैठ गए तो फिर ये खड़े कौन है? अच्छा ठीक है, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए. पीछे एक साहब खड़े थे. तो words are also like the person who is known by the company he has kept. Words किस कंपनी में रहे हैं, कौन से वर्ड्स के साथ यूज हुए हैं, थ्रू सम प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस उसका कल्चर या उसके संस्कार इस वर्ड में थोड़े से एंटर हो जाते हैं. वर्ड सिर्फ डिक्शनरी में जो है, डिक्शनरी में तो वर्ड का वोकेशन लिखा है. जिस तरह से कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, इस तरह ये वर्ड है एप्पल. इसका मतलब है, इसका काम है कि ये रेड कलर का जो फ्रूट है इसे कन्वे करे, ये उसका काम है, वोकेशन. लेकिन ये कहाँ कहाँ यूज हुआ है, इसे आपने कहाँ कहाँ सुना है, इससे एक सबकॉन्शियस लेवल पे वट एवर नाउन यू लिसन, इट मेक्स मेनी रेफरेंसेस इन योर सबकॉन्शियस. तो वो जो वर्ड बना रहा था ओरिजिनल लैंग्वेज में, रेफरेंसेस सबकॉन्शियस में, अब ये ट्रांसलेशन में इसका तो सिर्फ वोकेशन यहाँ आया है, उसके रिलेवेंस और उसके रेफरेंसेस और उसकी जो एसोसिएशन साथ में नहीं आई हैं, तो कहीं ना तो उसका नुकसान होगा. बट व्हाट इज द चॉइस? यू सी, वी कांट लर्न ऑन द लैंग्वेज. ऑल्दो आई मेट अ लेडी टुडे, देयर शी स्टैंड्स, शी नोज 7 लैंग्वेजेस. So, or maybe she was just trying to demoralize me, who knows. So, but you can't learn all the languages. So in this wall, it's ironic that the languages are made for communication, and more often than not, language becomes the barrier in communication. So in this wall, the windows are translations. So this is
the only substitute one can offer. Sorry, some loss is there, I agree. Thank you, sir. Thank you very much. There's this gentleman here. Please introduce. Sir, I'm Parvinder. I'm a journalist in Jamshedpur. सर एक दौर था फिराक गोरखपुरी का, फिर राजेंद्र सिंह बेदी का, किशन चंदर का. तो सर इस दौर में आप किसको देखते हैं, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स तो उर्दू पढ़ ही नहीं रहे. बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है. सर मेरे खुद डैड वाज एन उर्दू पोएट इन जमशेदपुर. उनकी डायरी पढ़ी हुई है उर्दू में और मैं पढ़ नहीं पाता हूँ. मुझे भेज दीजिए. तो सर आप क्या नहीं, ऐसा नहीं है. मैं आपको बताऊं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. गुड यू हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. आई मस्ट टेल यू, एक पिछले 8-10 साल में ये हुआ है दैट यंग बॉयज एंड दे आर नॉट मुस्लिम्स have somehow developed interest in Urdu poetry, because lot of Urdu poetry is available in Devanagari, and they have learned language and they write very good poetry. I mean, there are many, not one. बहुत अच्छी शायरी करते हैं. तो कहीं उनको समझ में आया है कि ये जो प्रोपेगेंडा या जो बिलीव है या जो इसे पाकिस्तान ओन कर रहा है या मुल्ला ओन कर रहा है, ये गलत है. इट्स रॉन्ग. ये हिंदुस्तान की ज़मीन की भाषा है. और पंजाब का, आप तो पंजाब के हैं, पंजाब का 20th सेंचुरी में उर्दू में जो कंट्रीब्यूशन वो किसी का नहीं है. सबसे ज़्यादा पंजाब का. आपने जो सारे नाम लिए ये सारे के सारे पंजाबी हैं. मैं तो कृष्णचंद्र का भगत हूँ. जिन राइटर्स ने मुझे इन्फ्लुएंस किया है उनमें से कृष्णचंद्र. और यहाँ मैं बैठ के नहीं कह रहा हूँ. मेरी जो पहली पोइट्री की किताब थी, आमतौर से होता है प्रोज की किताब में बाहर एक शेर लिखा होता है. मेरी पोइट्री की किताब पे एक पैराग्राफ, पहले पेज पे पैराग्राफ कृष्णचंद्र का लिखा है. ही वॉज अ ग्रेट राइटर. बेदी साहब ग्रेट. आई एम सो फॉर्चुनेट दैट आई न्यू ऑल दीज पीपल पर्सनली बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स एंड बिकॉज ऑफ माई अंकल एंड सो ऑन. आई वॉज born in that clan. It was a big clan of progressive writers. तो मैं उसी में पैदा हुआ. मैंने तो इन सबको बचपन से देखा है. बड़े होकर इनके साथ बैठा हूँ, इनसे बातें की हैं, इनसे सवाल किए हैं. तो ये जो है, अब ये चेंज आ रहा है ऑन ग्राउंड लेवल, दैट पीपल हैव अंडरस्टूड. इट इज़ द मोस्ट स्टूपिड आइडिया दैट उर्दू जो है वो मुसलमानों की ज़बान. किन मुसलमानों की? अरब जो हैं, या जो ईरानियन हैं, या जो कॉज़ेक्स हैं, या जो किर्गिस्तान के हैं, या जो कज़ाकिस्तान के हैं, या जो कुवैत के हैं, सब उर्दू बोलते हैं. इनमें से कोई उर्दू नहीं जानता. उर्दू सिर्फ हिंदुस्तान की ज़बान. लैंग्वेजेस रीजन्स की होती है, रिलीजन की नहीं होती. पंजाबी पंजाब की है, बंगाली बंगाल की है, गुजराती गुजरात की है. हाउ कैन अ लैंग्वेज बी ऑफ अ रिलीजन? इट इज़ नॉट. क्या क्रिश्चियनिटी की कोई लैंग्वेज है? हिंदुइज्म की कोई लैंग्वेज है? जुडाइज्म की कोई कौन लैंग्वेज है? कोई लैंग्वेज नहीं. उनकी होली बुक एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में हो सकती है. एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 99% ऑफ दैट कम्युनिटी डोंट नो दैट लैंग्वेज जिसमें उनकी होली बुक होती है. सर एक चीज़ थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ. जी सर, मेरे घर में विलियम शेक्सपियर नहीं है, मेरे घर में दीवाने गालिब है. तो मैं वो बताना चाहता हूँ. नहीं है तो, मगर पढ़ते हैं आप कि नहीं? मैं पढ़ता हूँ सर. सर आपके लिए एक शेर, वो देवनागरी में होगा. या सर. वंडरफुल वंडरफुल. सर मैं एक शेर आपके लिए सोचा हुआ था. बहुत मुझे सही सुनाइएगा. पता नहीं अब सही है कि नहीं, बिकॉज मुद्दत से सुनते आए थे नाम मोमिन का, बारे आज देखा भी हमने शौरा के इमाम को. मोमिन का सर, मुद्दत से नाम सुनते आए थे मोमिन का, बारे आज देखा भी हमने आज शौरा इमाम का. मानी नहीं आपने मेरी बात. खैर कोई बात नहीं. चलिए कोई और सवाल. Let's get a lady. नहीं सर, ये भी हैंडी है. Okay, we'll come back to you after that. साइज में Yes, थोड़ा at the back. छोटा है तो क्या? Okay, we'll first go there, then we'll come to the lady. जी. Where is he? ये. जी सर. जावेद साहब, सिनेमा की बात करते हैं थोड़ी. ज़रूर. आई लव इजी क्वेश्चन. जी बिल्कुल. जी. मैं देख रहा हूँ कि हिंदी सिनेमा में आजकल तो फ्लॉप पे फ्लॉप हो रहे हैं. आपने कहा था कि आपने एंग्री यंग मैन को बनाने में आपकी भूमिका रही है. मैं सोच रहा हूँ कि आज के हालात में
कोई नया कैरेक्टर क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। नया कैरेक्टर कब आता है? What is the definition of a hero? Hero is the personification of contemporary morality and contemporary aspirations. Morality and aspirations keep changing with time, so does the hero. आप देखिए देवदास कितना बड़ा हीरो था। हिंदुस्तान में कोई 11 या 12 बार बनी है वो पिक्चर देवदास। और देवदास जो थे, मेरे फादर की जो जनरेशन थी वो तो कसम का, फॉर देम देवदास, शरद बाबू देवदास वाज लाइक अ होली बुक टू देम। और एक मरतबा मैंने वो दिलीप कुमार की, हम स्कूल में थे, दिलीप कुमार की देवदास रिलीज हुई तो मैं देख के आया। तो मैंने अपने फादर को कहा, देखिएगा आप देवदास की बहुत बात करते थे, दिलीप कुमार की, तो ही टोटली रिजेक्टेड। क्या बात कर रहा था, दिलीप कुमार क्या बनेगा देवदास? वो तो KL सेगल पैदा हुआ था देवदास करने के लिए। और तुम्हें मालूम है, हम यूनिवर्सिटी में थे उस वक्त, जब वो पिक्चर रिलीज हुई थी तो लड़कों में खांसने का फैशन हो गया था, लड़के खांसते थे देवदास की तरह। तो मैंने कहा मेरा बाप बोल रहा है तो कुछ बात होगी। वो मेरे दिल में रह गई बात। आफ्टर मैनी ईयर्स आई वॉज इन पूना, आई वॉज राइटिंग सम स्क्रिप्ट। तो शाम को कुछ करने को नहीं होता था तो मैं चला जाता था फिल्म इंस्टीट्यूट में। वहाँ पर वो है नायर साहब, तब तक ही वो लाइव जो आर्काइव है। तो मैंने कहा साहब आपके यहाँ देवदास है, वो मैं आई डू द पेमेंट, यहाँ पर थिएटर में लगवा दीजिए मैं देखूँ। उन्होंने लगवा दी। इट वन ऑफ द मोस्ट फनी फिल्म आई हैव सीन इन माई लाइफ। तो अब वो उनको वो पसंद थी। तो ये जो होता है हीरो, अब देवदास आज नहीं है हीरो। एक आदमी शराब पी के अपने आप को तबाह कर रहा है और मर रहा है। और न सिर्फ मर रहा है, माफ़ कीजिएगा बंगाली हैं, बुरा मानेंगे थोड़ा, नहीं बंगाली, आपने बंगाली से आपकी शादी हुई। भाई तू अगर बर्बाद होना चाहता हो जा। अब तेरी गर्लफ्रेंड की शादी किसी दूसरे आदमी से हो गई है, तुम उसके दरवाजे पे जाके वो लड़की को क्यों मैरिज कर रहे हो? कि उसके दरवाजे पे जाके मर रहे हो, पारो पारो वहां कर रहे हो। ये तुम्हें कुछ ख्याल करो, शी इज अ मैरिड वुमन। तो अब उस बात को भूल जाओ ना, वो चैप्टर क्लोज करो। तो इस तरह का एक बहुत ही पैसिव सेडिस्टिक आदमी था देवदास, मगर वो हीरो था। उसके बाद फिर कोई दूसरा हीरो आ गया, राज कपूर, जो चार्ली चैपलिन टाइम थे, आवारा, श्री 420। ये वो ज़माना था कि जब आपका ड्रीम बाकी था, वो कि अभी कुछ दिनों में प्रॉस्पेरिटी इज ऑन द नेक्स्ट पेज ऑफ द कैलेंडर, बस अभी उल्टेंगे और प्रॉस्पेरिटी। वो सब हुआ नहीं। उसके बाद रेबल स्टार आया। रेबल स्टार शम्मी कपूर रेबल किससे करते थे? वो समाज से रेबल नहीं करते थे, वो अपनी अम्मा से करते थे जो ललिता पवार होती थी। दैट वॉज द रिबेलियन एंड ही वॉज कॉल्ड रेबल स्टार। ओनली टेलिंग द मदर कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा, मैं उससे करूंगा। दिस वॉज द रिबेलियन। उसके बाद जब हालात ख़राब हुए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पहली दफ़ा हुआ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस, ये वो, तो उसमें एंग्री यंग मैन का आना जो था वो अंडरस्टैंडेबल है। हमारा सिर्फ फ्लूक हो गया, हमें कुछ नहीं पता था सोशियो पॉलिटिकल रेलेवेंस। हम तो कहानियाँ लिख रहे, इत्तेफाक से हमारा पत्ता सही जगह पड़ गया, वरना हमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी, आप यकीन कीजिए। तो चेंज अब क्या है चक्कर दोस्त, जो सवाल है, व्हाट इज द मोरालिटी ऑफ टुडे? वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन दैट दिस मच इज फॉर मी एंड रेस्ट फॉर अदर्स? वो लाइन कहाँ है? सारा मेरा है ही नहीं, वेग है। वी आर नॉट क्लियर। What do we owe to the society? What do we owe to our family? What do we owe to ourselves? We are not clear. जो मोरालिटी जब आपके क्लियर नहीं है और आपके एस्पिरेशन जो हैं वो ऐसे हैं कि आप ओन नहीं करना चाहते पब्लिक, आप ये चाहते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति का सबसे बड़ा अवार्ड आपको मिल जाए, वो आप खुल के बोलते नहीं हैं। ऑल ऑफ अस वांट टू बिकम रिच। अब वो ज़रा पेटी लगता है, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगता। तो आपके एस्पिरेशन डूबियस हैं और आपकी मोरालिटी कंफ्यूज है। तो इस सिचुएशन में हाउ वी विल हैव अ हीरो? पोएट का यही तो काम है सर, पोएट का यही तो काम है कि जो भावना चारों तरफ फैली हुई है, जो कहीं नहीं जा रही है ठीक से, उसको आप एक जुबान दें। चलिए मैं कोशिश करूँगा, लेकिन
ये इतनी आसानी से होता नहीं है. Good evening. Evening, sir. I am Priyam, and I think I'm the youngest here, which is good, but then it also feels sad because the youth of the city are missing out on a lot of good literature that is coming here. Tough luck. I'm also, I'm going to start my master's in English literature soon. There was a show of yours called Har Ghar Kuch Kehta Hai, where you take the host through your house in Lucknow, where you talk about your memories. So, not many like dwelling in the past these days. They think dwelling in memory and in the past and conservation of memory is a waste of time. What, according to you, is the importance of memory, roots, your own roots, and the safekeeping of memory? देखिए ये सब काम तो हमारी एज के लोगों का है. अब आप मेमोरी में जाएंगी तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी. कितनी दूर पीछे जाएंगे आप. लेकिन क्या है कि आई गिव एन एग्जांपल. ये कोई बहुत अभी एक्सटेम्पोर नहीं है, मैं पहले भी ये एग्जांपल देख चुका हूँ. व्हाट शुड बी आवर रिलेशन विद आवर ट्रेडिशन, विद आवर रूट्स एंड द प्रोग्रेस, न्यू आइडियाज़, डिज़ायर टू मूव फॉरवर्ड. ये क्या ऑपोजिट फोर्सेस हैं एक दूसरे की? नहीं, ऐसा है नहीं. यू मस्ट हैव सीन चिल्ड्रन, दे टेक अ स्मॉल पेबल, tie it in a string, and then they start swinging it over their head, and slowly they leave the string, and slowly the circle becomes bigger and bigger. This stone is rebellion. It wants to move away. This string is the tradition. It is holding it. But if you take out the stone, this string will not be able to go that far. If you break the string will fall. We need this tension between the tradition and modernity. इनमें से एक चीज़ भी टूट गई, एक चीज़ भी हल्की पड़ गई तो गड़बड़ हो जाएगी. हमें एक पेड़ है, we are like trees. You see, the pity, अफसोस ये है, this is the pity, that we are not producing complete trees. When you go to Vernux, they may not have the world view, they may not have the liberal values or the modern values, but more often than not, they are rooted. They know about their own culture, the culture of the soil, culture of their land where they were born. दूसरी तरफ, you see children who are right from the beginning educated in convents or public schools or English schools. They are more modern, they have more modern and liberal values. I mean, exceptions will be on both the sides, leave aside, by and large. But they are not rooted. They don't know anything about Indian folk, about Indian mythology, about Indian traditions, so on. Their own mother tongue. तो हम या तो रूट्स बना रहे हैं या ब्रांचेस बना रहे हैं. कंप्लीट ट्री हम बना ही नहीं रहे. The tree needs roots, trunk which takes you up, and the branches which makes you spread out. Now, the more you spread out as a tree, the deeper your roots should be. Otherwise you will fall. So same way, हमारे यहाँ ये problem हो गया है कि it is either or. Our education system should change. Even at home, people should be very careful. Now, इसमें एक ज़रा सा खेल है. Giving mythology, giving tradition is very good, because without that the child doesn't get a basic identity. But see to it that certain prejudices, certain biases don't go along with that. They can be vis-a-vis the community, and they can be vis-a-vis women or other castes. That should not go. That you have to be decipher very clearly. But the child should know all this. अरे भाई आप, मैं तो एक आध स्कूल में गया, मैं, are you proud that you are Indian? Oh, of course we are proud. Okay. You don't like Indian food. You don't like Indian music. You don't like Indian dances. You don't like Indian costumes. You don't like Indian festivals. What do you like about India? What? And they had no answer. हमने अपने बच्चों को वो कल्चर नहीं दिया जो हमें मिला था.
हमको मिला है, लेकिन हमने आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए कि ये सब बेकार बातें समझा हमने। तो ये ज़रूरी है कि जहाँ एक तरफ यू आर स्प्रेडिंग आउट, ऑल दैट इज द पास्ट इज नॉट गुड, all that is new is not good. Some of the good is here, some of the good is there. Life doesn't offer you bad and good. It offers you packages. And in every package you have something good, something bad. कुछ ऐसा रखिए कि एक 5 बड़े बड़े अच्छे, उसके नीचे 9 मीडियम साइज़ ख़राब, उसके नीचे 2 छोटे छोटे 11 अच्छे, उसके नीचे 9 मीडियम साइज़ ख़राब, दूसरे में 6 बड़े बड़े अच्छे, उसके आगे 7 बड़े बड़े ख़राब, उसके नीचे 19 छोटे 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 अच्छे, उसके नीचे 11 छोटे छोटे ख़राब. नाउ यू आर कन्फ्यूज कि कौन सा वाला पैकेज बेटर रहेगा. दैट इज़ हाउ इट इज़. So we should be smart enough to pick good from both the packages and leave the bad there. अभी ये भी है कि एम्पावरमेंट में, मॉडर्निटी में ऐसी बेवकूफ़ी की बातें भी होती रहती हैं जो नहीं होनी चाहिए. अब देखो लड़कियां जो हैं, दे हैव स्टार्टेड स्मोकिंग. आज लड़कों में परसेंटेज कम हो रही है सिगरेट पीने की, एंड लड़कियों में इंक्रीज है. अरे भाई तुम अपने लंग्स खराब करके अपने को इम्पार्ट बता रही हो क्या? फ़ायदा क्या है? दिस इज़ नॉट एम्पावरमेंट कि आपने धुआं फेंका ऐसे, नाउ आई एम फ्री. ये तो बड़ा इजी वे आउट है. यू शुड बी फ्री बाय डूइंग गुड वर्क, बाय इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, एंड हैव योर टर्म्स एंड कंडीशंस इन एनी रिलेशनशिप विद एनी मैन. Okay, Javed Saab, again, I'm sounding like a stuck record. You made your point with such wonderful metaphors. So now I was just wanting, before I take another question, to ask you to recite Waqt. One person has asked. They're all kind of transmitting bad. I totally understand. It is very difficult to say that I don't want to listen poetry, because उससे लगे अरे भाई इनको तो आर्ट की कदर ही नहीं. लेकिन ये कि होता है मौका, कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह पोइट्री ही सुनाई जाए. Yes, please. And if I could request you, please start with Waqt. Shall I start and end with Waqt? No, एक ही poem just सुना. three. हाँ? Just three. देखिए सर क्या है कि अब आप लोग यू हैव आस्क्ड फॉर इट. People who know me only through my film songs, when they get into this zone, they get a cultural shock, because my poetry is totally different from my songs. So कभी कभी जब उनसे नहीं सहा जाता तो they ask me कि आप रोमांटिक पोइट्री नहीं लिखते हैं? तो I tell them लिखता हूँ, वो मैं फ्री में नहीं लिखता हूँ. I charge for that. तो anyway, आप ये जो आपने बोला, ये पोएम है जो मुझे मालविका जी ने कहा आपको सुनाने को. और आप लोग तो साइंटिस्ट हैं, आप लोग टेक्निकल लोग हैं. आई एम श्योर दैट यू विल अप्रिशिएट इट. देखिए आपने देखा क्या हो रहा है. 3 आदमी तो फौरन चल दिए. उनका भाई अब तो ये पोइट्री सुना रहा है. ये हो रहा है. उधर से 4 लोग खड़े हुए. अच्छा कि कब जाए. पोएम का टाइटल है वक्त. ये वक्त क्या है? ये क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुजर रहा है कॉन्स्टेंटली? ये वक्त क्या है? ये क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुजर रहा है? ये जब न गुजरा था तब कहाँ था? कहीं तो होगा. गुजर गया है तो अब कहाँ है? कहीं तो होगा. कहाँ से आया, किधर गया है? ये कब से कब तक का सिलसिला है. ये वक्त क्या है? ये वाक़ये, हादसे, तसादुम, these incidents, these accidents, these conflicts, every joy, every sorrow, every pain, every pleasure. ये वाक़ये, हादसे, तसादुम, हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक अज़ियत, हर एक लज्जत, हर एक तबस्सुम, एवरी स्माइल, हर एक आंसू, हर एक नगमा, हर एक खुशबू, वो ज़ख्म का दर्द हो कि वो लम्स स्पर्श का जादू, खुद अपनी आवाज़ हो कि माहौल की सदाएं, ये जहन में बनती और बिगड़ती हुई फ़िज़ाएं, वो फ़िक्र में आए ज़लज़ले हों कि दिल की हलचल, तमाम एहसास, सारे जज्बे
all feelings, all emotion. ये जैसे पत्ते बहते पानी की सतह पर जैसे तैरते हैं, अभी यहाँ है, अभी वहाँ है, और अब है उछल। दिखाई देता नहीं है, लेकिन ये कुछ तो है जो कि बह रहा है। ये कैसा दरिया है, किन पहाड़ों से आ रहा है, ये किस समंदर को जा रहा है, ये वक्त क्या है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझा रहे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हो, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हो। कभी कभी मैं सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हो, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हो। इस एक लम्हे में सारे लम्हे तमाम सदियां छुपी हुई हो, न कोई आइंदा ना गुज़िश्ता। जो हो चुका है वो हो रहा है, जो होने वाला है हो रहा है। कि क्या ये मुमकिन है सच्चे हो के सफ़र में हम हैं, गुज़रते हम हैं। जिसे समझते हैं हम गुज़रता है वो थमा है, गुज़रता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है मुंजमद या पिघल रहा है। किसे खबर है, किसे पता है ये वक्त क्या है। अब आपने पिंजरा खोल दिया है तो भुगतिए। ये एक कविता है, ये खेल क्या है, और इसमें आप देख लीजिएगा, मीनिंग खुद देख लीजिएगा। मेटाफर जो है चेस बोर्ड का है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है, जो मेरा ओपोनेंट है, मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतज़ार में है। मगर मैं कब से सफ़ेद खानों स्याह खानों में रखे काले सफ़ेद मोहरों को देखता हूँ। मैं सोचता हूँ ये मोहरें क्या हैं। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरें हैं सिर्फ लकड़ी के हैं, खिलौने हैं, तो जीतना क्या है, हारना क्या, न ये ज़रूरी न वो अहम है। अगर खुशी है न जीतने की न हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या है। मैं सोचता हूँ जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लूँ, ये मोहरे सचमुच के बादशाह हो वज़ीर, सचमुच के हैं प्यादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज, रखती है जो कि मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूँ तो सोचता हूँ ये खेल कब है। ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जायज़। कोई ये कहता है जैसे मुझसे, ये जंग भी है ये खेल भी है। ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रह जाए मगर जो है बादशाह कभी उस पर कोई आँच भी ना आए। वजीर ही को है बस इजाज़त कि जिस तरफ भी वो चाहे जाए। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है। प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस ना जाने पाए। मैं सोचता हूँ अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है। अगर यही है ये खेल तो फिर ये खेल क्या है। मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूँ। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतज़ार में। देखिए नहीं नहीं वो गुमनाम में आना वो ज़रा स्ट्रॉन्ग है जी।
एक पोयम है आंसू। आपने देखा होगा, बहुत से लोग, मैं भी, नावल पढ़ रहे हैं या प्ले पढ़ रहे हैं और कहीं कोई इमोशनल सिचुएशन आती है तो हमारी आंखों से आंसू बह जाते हैं। फिल्म देखते हैं तो हम रो देते हैं सिचुएशन। ये आंसू जो है ये क्या है? किसी का गम सुन के मेरी आंखों में एक आंसू जो आ गया है, ये आंसू क्या है? ये आंसू क्या एक गवाह है मेरी दर्दमंदी का, मेरी इंसान दोस्ती का? ये आंसू क्या एक सबूत है मेरी जिंदगी में खुलूस सिंसियरिटी की एक रोशनी का? ये आंसू क्या ये बता रहा है कि मेरे सीने में एक हसास सेंसिटिव दिल है जो कि किसी की दिलदोज दास्तां जो सुनी तो सुन के तड़प उठा है, पराए शोलों में जल रहा है, पिघल रहा है। मगर मैं फिर खुद से पूछता हूँ, ये दास्तां तो अभी सुनी है, ये आंसू भी क्या अभी ढला है? ये आंसू क्या मैं समझूं पहले कहीं नहीं था? मुझे तो शक है कि ये कहीं था। ये मेरे दिल और मेरी पलकों के दरमियान एक जो फासला है, जहां ख्यालों के शहर बसते हैं और ख्वाबों की तुरबतें हैं, ग्रेवयार्ड्स, जहां ख्यालों के शहर बसते हैं और ख्वाबों की तुरबतें हैं, जहां मोहब्बत के उजड़े बागों में तलखियों के बबूल हैं और कुछ नहीं है, जहां से आगे हैं उलझनों के घनेरे जंगल। यह आंसू शायद बहुत दिनों से वहीं छुपा था। जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंज तो मसलहत, वो सरोज, वो किल्ड बाय एक्सपीडियंसी कि भैया ये गम न करना, इसमें नुकसान हो जाएगा। जैसे आजकल कई गम आप नहीं करते हैं। जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंज तो मसलहत के हाथों न जाने कब कत्ल हो गए थे, तो करता फिर किस पे नाज आंसू कि हो गया बेजवाब आंसू विदाउट एनी रीजन, यतीम आंसू, यसीर आंसू, अनाथ आंसू। न मोतबर था, न क्रेडिबल था, न रास्तों ही से बाखबर था, तो चलते चलते ठिठक गया था, झिझक गया था। इधर से आज एक किसी की गम की कहानी का कारवां जो गुजरा, यतीम आंसू ने जैसे जाना कि इस कहानी की सरपरस्ती मिले तो मुमकिन है राह पाना, तो एक कहानी की उंगली थामे उसी के गम को रुमाल करता, उसी के बारे में झूठे सच्चे सवाल करता। ये मेरी पलकों तक आ गया है। We have tears in the storage for some other reason that we don't want to face. Reason that we don't want to own, perhaps we can't afford to own that. So it is there. And when we read a novel or see a film or hear some heart-touching story, we take out the tears which were in the store. यहाँ निकाल दो। ये सिर्फ tears के लिए नहीं है, ये नफरत के लिए भी है। आप में क्यों इतना गुस्सा आया, कहाँ से आया, ये बिटरनेस, ये वेनम कहाँ पैदा हुआ जो आपके स्टोर में था? अब आपको अगर सही मौका मिल गया कि ये सेफ है, यहाँ मैं क्राउड में निकाल दूंगा अपना वेपन, अपना वेनम, कि कोई पकड़ेगा भी नहीं, कुछ नहीं होने वाला, ये सेफ है, इट इज सोशली एक्सेप्टेड नाउ, तो यू टेक आउट दैट वेनम देयर। एनीबडी, व्हेन आई सी दिस सोशल मीडिया, नो हैप्पी पर्सन कैन बी दैट बिटर, इट्स नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। उसकी जो बिटरनेस है, उसकी अनहैप्पीनेस से, उसके फ्रस्ट्रेशन से आ रही है, वो निकल कहीं और रही है। लेकिन ये पैदा कैसे हुई? दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, परोकियल और कम्युनल। 1, जिनके बाप ने उन्हें बताया है कि वो लोग जो हैं बहुत बुरे लोग होते हैं। दुनिया में हर आदमी के बाप से ज़्यादा काबिल आदमी कोई नहीं होता। एवरीबडी हैज़ अ फादर हु वाज अ जीनियस बट द वर्ल्ड डिड नॉट अप्रिशिएट हिम, including my brother also has a father. I don't have. My brother has a father who is perfect, wonderful. तो या तो बाप ने बता दिया, अब मैं मानूं कि ये ठीक होते हैं लोग या ये बुरे नहीं, तो मेरा बाप गलत था क्या? वो तो गलत हो ही नहीं सकता। दूसरे, मेरी जिंदगी में फेलियर है, मैं नाकाम हूँ, मैं बिटर हूँ, मेरी रिलेशनशिप्स कोलैप्स कर गई है, मेरे एम्बिशन जो हैं वो मारे गए, ख़त्म हो गए, आई एम अ नोबडी। तो मेरे अंदर गुस्सा है, वो मैं गुस्सा किस पे निकालूं?
तो ये अच्छी जगह है, यहाँ बहुत से लोग गुस्सा निकाल रहे हैं, मैं भी निकाल लेता हूँ। ये एक मास जो होता है लिंचिंग में, अब भी मॉब लिंचिंग। तीसरे, ना उनके बाप ने बताया ऐसा कुछ गलत बात, ना ये फ्रस्ट्रेटेड है, दे आर कोल्ड ब्लडेड ऑपर्चुनिस्ट। अच्छा, ये दोनों जो हैं, ये ऐसा नहीं है कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट, थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो भी हो सकता है, थोड़ा सा इधर भी आ सकते हैं, बट बेसिकली दिस मैन इज एन अपॉर्चुनिस्ट। उसको लगता है ये करेंसी है तो वो करता है, कल को वो करेंसी नहीं कुछ और करने लगेगा। तो ये आप कितने लोग इस तरह के देखिए, आप इनको ज़रा सा क्वेश्चन कीजिए, आपको मालूम हो जाएगा इन 3 कैटेगरीज में कौन से हैं। इसके अलावा चौथा आदमी नहीं हो सकता। चौथा आदमी के पास इतनी एनर्जी, इतना टाइम ही नहीं है कि वो इतना नफरत कहीं वेस्ट करे। उसको मे बी ही मे डिसलाइक देम माइल्डली, विल फॉरगेट अबाउट इट। उसका इतना जुनून और इतना ऑब्सेशन नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक अनहैप्पी आदमी में हो सकता है या शेयर अपॉर्चुनिस्ट में हो सकता है, ऐसा मेरा ख्याल है। Thank you, Javed Saab, and thank you, ladies and gentlemen. This is the start of this wonderful 6-week journey we take, almost 2-month journey this year between Ranchi, Calcutta, and Bhubaneswar. You can follow all the sessions live on Facebook. The literary meets, the Tata literary meets always are about literature first. They're lit fests that put literature at the heart of all the conversations and presentations we make. And we do it with a lot of care, and which is why we have the love of poets like Javed Saab. And do follow us and support us with your, by just watching it, you will make us feel that we are doing something right by putting our heart and soul into these meets. Thank you very much. Like all good things must come to an end, we come to the close of this session. I would like to thank Javed Saab for this wonderful evening, which will remain forever etched in our memories. The game plan team, the IT team, the corporate communications team, and above all, the wonderful audience, without whom this event would not have been possible, and also the audience who have been connected online. Please join us for some tea and refreshment. Thank you and wish you a good evening. I'd also like to mention there are some books available if you would like to buy them. These books have been written by Javed Saab in Hindi and in English. You may kindly go and have a look at them, please. Thank you very much.